Social Studies. We all, the team of TPS, all the teachers of TPS, feel proud to be a part of your learning classes. Dear students, today we will complete our first chapter, the universe. And the last topic of the universe is eclipses. Eclipses occur when three heavenly bodies come into the line so that one blocks out the other. हमारी यूनिवर्स की थ्री हेवनली बॉडीज़ यानी सूरज, चाँद और ज़मीन मूव करते हुए जब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं और इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट छुप जाए तो इस नेचुरल प्रोसेस को हम एक्लिप्स कहते हैं. व्हाट इज़ एन एक्लिप्स? एक्लिप्स तब नमूदार होता है जब स्पेस में मौजूद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर देता है. मतलब सूरज, चाँद और ज़मीन इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक छुप जाए तो एक्लिप्स नमूदार होता है. अर्थ पे हम दो तरह के एक्लिप्सेस को देखते हैं. नंबर 1 सोलर एक्लिप्स एंड नंबर 2 ल्यूनर एक्लिप्स. नाउ हाउ डू एक्लिप्सेस हैपन? एक्लिप्सेस नमूदार कैसे होते हैं? ऐसा क्या प्रोसेस है जो इनके बदलने का बायस होता है? ल्यूनर एक्लिप्सेस अक्सर ज़्यादा नमूदार होते हैं. सोलर एक्लिप्स के मुकाबले में ज़मीन से सोलर एक्लिप्स को देखने वाला स्पॉट बहुत स्मॉल है और इस स्मॉल स्पॉट से सोलर एक्लिप्स को देखना 350 ईयर्स के बाद ही पॉसिबल होता है. ल्यूनर एक्लिप्स को रात के वक्त देखा जा सकता है जबकि सोलर एक्लिप्स को दिन के वक्त देखा जाता है. जी, एक्लिप्सिस सीज़न. जब चाँद, ज़मीन और सूरज परफेक्टली एक स्ट्रेट में आ जाएं तो एक्लिप्स सीज़न शुरू हो जाता है. जी डियर स्टूडेंट्स, हम दो तरह के एक्लिप्सेस देखते हैं. ल्यूनर एक्लिप्स जब ज़मीन अपना साया चाँद पर छोड़ती है तो इस वजह से चाँद डार्क हो जाता है. अर्थ जब सन एंड मून के दरमियान अंधेरा करती है तो मुकम्मल ल्यूनर एक्लिप्स होता है. इसी तरह सोलर एक्लिप्स जब मून अपना शैडो अर्थ पर डाले तो सन कम्प्लीटली छुप जाता है. मतलब ये कि चाँद जब सूरज और ज़मीन के गिर्द आए और इसके शैडो से ज़मीन का कुछ हिस्सा छुप जाए तो न्यू मून नज़र आता है. The moon comes between the sun and earth and casts a shadow on part of the earth. Then new moon arrives.
जब भी चाँद का साया ज़मीन या ज़मीन के शैडो को हिट करता है तो एक्लिप्स नमूदार होता है। इन दिस क्लिप यू सॉ दैट a lunar eclipse occurs when the moon moves into the earth's shadow, and a solar eclipse happens when the moon moves in the front of the sun as seen from the location on earth. In the previous video, we talked about the phases of the moon and how that relates to the moon's orbit around the Earth. It might be helpful to watch that video first. To put things in perspective, here's the relative size of the Sun, the Moon, and the Earth. The Sun is about 400 times bigger than the Moon. Now let's look at the actual distances between them. The Sun is also about 400 times further from the Earth than the Moon is. This is why the Sun and the Moon appear to be about the same size in the sky. So now you know that the animations on screen are not always drawn to scale. The Moon's orbit is actually not a perfect circle. It's in the shape of an ellipse. When it's closest to the Earth, we call it perigee. When it's farthest away from the Earth, we call it apogee. It's only a small difference, but it's enough to cause the Moon to grow and shrink as seen from the Earth. Okay, now we get into some rare events with the Moon. Each time a new moon happens, there's a chance that the Moon will block the sunlight and cause a shadow to appear on a portion of the Earth. When this happens, it's called a solar eclipse. The reverse can also happen. Each time we have a full moon, there's a chance that the Earth will block the sunlight from reaching the Moon. We call this a lunar eclipse. So now the question is, why don't we get a solar eclipse and a lunar eclipse every month? As the Earth orbits around the Sun, we can map out a 2D plane that's referred to as the ecliptic. The Moon doesn't orbit on the same plane. It's tilted by about 5 degrees. This means that most of the time, the Moon passes above or below the Sun as seen from the Earth. We can map out 2 invisible points in space at which the Moon's orbit crosses the ecliptic. We call these the lunar nodes. When they line up with the Sun, Earth, and Moon, that's when a solar eclipse or lunar eclipse will occur. This is referred to as an eclipse season. These happen about twice a year. During an eclipse season, there's no guarantee that you'll be able to see anything. In the case of a solar eclipse, the Moon may pass slightly above or below the Sun and give us a partial solar eclipse. This won't really dim the sunlight enough for us to see it. When the Moon entirely crosses the Sun, we will be able to see it. If the Moon is closer to apogee, then it will appear smaller and we'll get what's called an annular solar eclipse. If the Moon is closer to perigee, then it will appear bigger and we'll get what's called a total solar eclipse. Even if you're lucky enough to be on the right spot on the Earth, the longest you'll be able to see a solar eclipse is about 7 minutes. You'll need to be under the umbra, which is the darkest part of the Moon's shadow. For a lunar eclipse, the Earth is the one casting the shadow. We may see a partial lunar eclipse or a total lunar eclipse. This can be seen from anywhere on Earth where it's night and will last for several hours. For about an hour, the Moon will appear red because of the sunlight bending around the Earth. This is where the term blood moon comes from. So next time someone says the words solar eclipse or lunar eclipse, you could explain it to them, or you could just send them a link to this video. I'm Jared Owen. Thank you for watching. जी स्टूडेंट्स, मुकम्मल सूरज ग्रहण तब लगता है जब चाँद कम्प्लीटली सन को ब्लॉक कर दे और मून का अम्ब्रा ज़मीन पर गिरता है. What does umbra means? The dark central part of the moon on the sunspot. मतलब कि सूरज के ऊपर जो चाँद का डार्क शेडो आता है जो कि सूरज के दरमियानी अंदर वाले हिस्से पर आता है, वो अम्ब्रा कहलाता है. There are
There are four types of solar eclipses. Number one, total solar eclipse. Number two, partial solar eclipse. Number three, annular solar eclipse. And number four, hybrid solar eclipse. Here we will discuss three eclipses of solar. मुकम्मल सूरज ग्रहण कंप्लीट सोलर एक्लिप्स तब लगता है जब चांद मतलब मून्स अम्ब्रा के एग्जैक्ट स्पॉट पर हो। पार्शियल सोलर एक्लिप्स तब नमूदार होता है जब हम पेनम्ब्रा में हो, मतलब डिफ्यूज शेडो इज कॉल्ड पेनम्ब्रा, इट कॉजेज पार्शियल एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स ऐसा ग्रहण है ये हम तब देख पाते हैं जब चांद अपनी ऑर्बिट में मूव करता हुआ अर्थ से बहुत दूर चला जाए, फार्दर फ्रॉम द अर्थ। इस एक्लिप्स में चांद बहुत छोटा दिखाई देता है, मतलब कि हम आउटर रिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सन ही देख पाते हैं। ज़मीन हरकत करते हुए सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए तो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दे तो वहाँ ल्यूनर एक्लिप्स नमूदार होता है। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ल्यूनर एक्लिप्सेस: टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, पेनम्ब्रा ल्यूनर एक्लिप्सेस। सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स को। जब मून फेजेस मुकम्मल तौर पर ज़मीन के अम्ब्रा में चले जाते हैं, यानी कि उसके डार्क शेडो में चले जाते हैं, तब ल्यूनर एक्लिप्स होता है, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होता है। पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स जब चांद मुकम्मल तौर पर अम्ब्रा में नहीं छुपता, तब मुख्तलिफ पार्ट्स में एक्लिप्स होता है, जिसको कि हम पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। पेनम्ब्रा ल्यूनर जब चांद सिर्फ पेनम्ब्रा के पास से गुज़रता है, मतलब चांद का पार्शियल शेडो में से गुज़रना पेनम्ब्रा ल्यूनर एक्लिप्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सारे लेसन को समझने के बाद, इन वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद, हम अब डिफ़ाइन करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि हमारे यूनिवर्स में 3 हेवनली बॉडीज़ हैं, यानी कि मून, सन एंड अर्थ। ये तीनों हेवनली बॉडीज़ जब एक स्ट्रेट लाइन में आती हैं और कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर देता है तो एक्लिप्सेस नमूदार होते हैं। जब चांद हरकत करता हुआ ज़मीन और सूरज के गिर्द आ जाए तो सोलर एक्लिप्स, और जब ज़मीन मूव करती हुई सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए तो ल्यूनर एक्लिप्स। डियर स्टूडेंट्स, you will learn your last question of your exercise today. Briefly explain how solar and lunar eclipses are caused. Now we will discuss your worksheet here, and here is the key of your worksheet. We will discuss your first question is on your worksheet. Here are the names of the planets in the solar system jumbled together. Arrange them in according to the distance from the sun. यानी कि यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड्स में प्लैनेट्स को डिस्क्राइब किया गया है, आपने इनको ऑर्डर में लिखना है, लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जी, नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज मैच द सोलर system bodies in column A with their features in column B. A कॉलम में आपका A, B, C, D, E है और कॉलम B में 1, 2, 3, 4, 5 है। सन को आप करेंगे अ स्टार, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लूटो 7 magnetic rings, Mercury too close to the sun, Mars temperature -140 degrees Celsius to +17 degrees Celsius, Saturn 7 magnetic rings, and Pluto is no longer a planet. Now your third question, choose the correct answer.
Light travels at the speed of over 1 billion kilometer. C option is correct. And the Hubble telescope orbits at the height of dash above the Earth. And here is your second option is correct, 600 kilometer. C is the planet nearest to the Earth is Sun. The planet nearest to the Earth is C. Venus. The planet furthest from the Sun is Neptune. The force of gravity on Jupiter is more than half. Now, true or false? Your worksheet question number 4. State whether the following statements are true or false. Pluto is not a planet. True. Venus is a hot planet. True. Chanda is a natural satellite of the Earth. False. Saturn can be seen with the naked eye. True. A solar eclipse occurs when the moon is between the sun and the moon. True. आप अपनी वर्कशीट को इस की के साथ मैच करके अपने आंसर्स को करेक्ट कर लीजिएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, now your first chapter is complete. Get ready for the test of your first chapter. ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए हिकमतों वाले अल्लाह, हमसे मुसीबत और वबाई बीमारियों को हटा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।